Yes, sir. Good afternoon, participants. A wonderful good afternoon for everyone. On behalf of our LNCP institution, Hello India, I welcome you all for this beautiful afternoon session. Today, with us a special guest and a speaker, respected Sujit Panigrahi, CEO Fitness 365 and Joint Director of this program is here with us, and he is going to give share his expert opinion on age-appropriate activities for the foundation year class 6 to 8. And about him, Panigrahi takes a deep interest in technology, sports science, and education, and has over 23 years of experience in industries. And Panigrahi is has a post in Commonwealth Games Delhi 2010. He had the vision of creating a grassroots sports and physical education programs for 300 school students in India to play 60 minutes each day. And Panigrahi is a treasurer at School Physical Education Fitness and Leisure Skill Council India, a member of CBSE and NCT in Curriculum Committee also. And Panigrahi is also a co-founder of Cover Agent technology, which helped companies like Apple, Samsung, and BlackBerry, and Airtel, and Volvo, many mobile companies also. He has a keen interest in physical education activities also. And today, sir is going to present a wonderful topic on age-appropriate activities on behalf of LNCP, Hello India, and behalf of our respected principal. I welcome you for this presentation, sir. Now I request students to pay attention to respected Sujit Panigrahi, sir. He is going to deliver his expert opinion on this present subject. Welcome you, sir. Good afternoon, Sanjeev Patil, sir. It is indeed a privilege for me to be part of this mission for creating a program for all the physical education teachers across the country. So it's actually, so I would like to thank Sports Authority of India. I would like to thank Hello India, SAI LNCPE Trivandrum, and especially Dr. G. Kishore sir, Dr. Usha ma'am, and all the beautiful people who have been part of this team who is putting it together. So with that as this thing, so just a second. Yeah. Sir, your presence is a most privilege for us. It's mutual, sir. Yes, sir. It's a mutual respect. I think all of us are now part of one team, so we feel like one family right now. And so thank you so much, Patil sir. I think I was also present in the morning sessions where you and Sanjay sir presented, beautifully explained. So I hope I'll be able to do justice to it. So just to give background to all the participants who were there. For the last 7 days, we have had different sessions. So last week we had 4 sessions. So we started with Kishore sir talking about the role of physical education teacher. He talked about womb to tomb, where he talked about the importance of movement for humans. So basically, movement start inside a mother's womb. So that is how he started. It's a very beautiful example. So throughout your life. So importance of life, so essentially having an active and healthy living throughout your life, from the day you are born till death, is a very important aspect of physical education. And that is what he explained very beautifully. Madam Usha ma'am had talked about the difference between sedentary behavior and how to come out of it by following regimes of fitness and active lifestyle and physical activity. So she talked about the difference of that. The Fit India session where Ekta madam and Mr. Rohit Khanna talked about
the importance of schools. So basically, schools is where all the good and the bad habits are formed. So it's very important that all the good habits in terms of physical activity and healthy lifestyle actually begins in school. That's where the roles of physical education teacher is extremely important. आप सारे लोग द्रोणाचार्य की तरह हो, जैसे सचिन तेंदुलकर का जितनी इम्पोर्टेंस है उसके पीछे बहुत द्रोणाचार्य भी थे, आर्चेकर सर. तो बिहाइंड अर्जुना जैसे द्रोणाचार्य थे, तो इस तरीके से आप सारे लोगों का जो इम्पोर्टेंस है बहुत हाई है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए पी प्रोग्राम. Then Saroj Madam, NCR Dean of NCRT, she talked about what are the curriculum outcomes that we need to have, and what are the important things that a curriculum for India needs to have. And one of the most important things that she stressed, two important takeaways was, one was around active and healthy lifestyle is what she talked about as should be the goal of any P program. And the other thing that she talked about is that जितना भी P teachers है, आपके लिए important नहीं कि हम content क्या आपको दे रहे हैं कि 25 दिन के workshop के लिए, या अगर आपको हम थोड़ा सा भी आपको enable कर पाए ताकि you can search around on the internet, find lot of information. So all the thing that we are trying to do is to put some structure to this mad chaotic thinking. तो बेसिकली एज गोल ऑफ अ पी प्रोग्राम. फिर उसके बाद हमारा जो कल का सेशन था, यस्टरडे सेशन वाज बेसिकली अबाउट नर्सरी टू क्लास 5th के लिए क्या करिकुलम का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वेयर वी टॉक्ड अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट, वी टॉक्ड अबाउट हैविंग अ रेंज ऑफ मूवमेंट स्किल्स. तो बचपन से अप टू फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 5th यू नीड टू फोकस अ लॉट ऑन फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड एक्चुअली टीच चिल्ड्रन कि वो रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग, स्किपिंग, डॉजिंग, गैलपिंग, इस तरीके के जो लोकोमोटर स्किल्स किस तरीके से डेवलप कर पाए, मैनिपुलेटिव स्किल्स लाइक जैसे कैचिंग, थ्रोइंग, स्ट्राइकिंग, इस तरीके के मैनिपुलेटिव स्किल्स हो गए. बॉडी मैनेजमेंट के जो स्किल्स हो गए जैसे बैलेंस हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, टर्न्स हो गए, ये सारी चीजें वो किस तरीके से वो डेवलप कर पाए, क्योंकि वो नर्सरी टू 5th बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है. नर्सरी से लेकर क्लास 3 तक वो सारे डेवलप हो, एंड 3 ऑनवर्ड्स, 4th ऑनवर्ड्स जो है धीरे धीरे ये सारे स्पोर्ट्स स्किल्स पे वो ट्रांसफर कैसे, ये सारी चीजें हमने सीखा. सो द गोल 1 and 2 इज बेसिकली अबाउट लर्निंग अ लॉट ऑफ मूवमेंट स्किल्स एंड अप्लाइंग देम, ताकि हम बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज जो लाइफ में चाहिए, स्पोर्ट्स खेले ना खेले, ये सारे हमें ठीक से कर पाए. मान लो कोई हमारे को पत्थर फेंक दे तो हमें डॉज कर पाए, उस चीज को ठीक से कर पाए, रास्ते में जा रहे हैं, बैलेंस अगर बिगड़ रहा है तो चीजों को बैलेंस कर पाए. थर्ड गोल इज बेसिकली वो डेमोन्स्ट्रेटिंग सेफ प्रैक्टिसेस. बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो भी करें सेफ तरीके से करें, बोथ हम खेलें या हम एज पी टीचर भी सेफ्टी होना चाहिए, एज स्टूडेंट्स भी सेफ्टी होना चाहिए. सेफ्टी फॉर विथ रेस्पेक्ट टू आवरसेल्व्स एंड अदर्स. फिर पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. स्पोर्ट्स के थ्रू पर्सनैलिटी डेवलप होता है, सोशल बिहेवियर डेवलप होता है. फिर हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस जो है ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. और ये सारे हमारा थ्रू आउट ए लाइफ, हम अगर गोल 6 and 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हम स्पोर्ट्स खेले ना खेले, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम मोटिवेट इतना हो कि स्कूल भी छोड़ के चले जाए तो भी. बड़ी अच्छी एग्जांपल है अभी कोविड-19 के टाइम में ओनली दोज हु हैव गुड फिजिकल फिटनेस और ये वो रिकवरी रेट उन सबका अच्छा है जिनका फिजिकल फिटनेस पे जिन लोगों ने ध्यान दिया हुआ है. जितने भी अफेक्टेड केसेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ. तो योगा, फिजिकल एक्टिविटी, सारे हम फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सब भूल जाते हैं, लेकिन हम जो बड़े हो जाते हैं एट सम स्टेज इन लाइफ, जैसे मैं 47 का हूँ, तो अभी इस स्टेज में लगता है कि हमें कुछ एक्टिविटी करना चाहिए. तो लाइफ टाइम फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी लाइफ मेंटेन करना बहुत जरूरी है. एंड कुछ बच्चे जो स्पोर्ट्स में अच्छे करेंगे उनको हम सपोर्ट कर पाए. एसेंशियली टू समराइज, हम इंडिविजुअली और बाकी के साथ बच्चों को इनेबल करें कि वो इंडिविजुअली और बाकी के साथ फिजिकल स्किल्स और वैल्यूज जो है ना स्पोर्ट्स के थ्रू वैल्यूज वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाए. एंड दे शुड विल एंजॉय लाइफ टाइम ऑफ एक्टिव लाइफस्टाइल. मोटा मोटा अगर देखा जाए फिजिकल एजुकेशन का लर्निंग आउटकम्स, देयर आर 3 की आउटकम्स: फिटनेस एंड एक्टिव लाइफस्टाइल. सो एसेंशियली मेकिंग श्योर दैट फिजिकल एजुकेशन में एवरी चाइल्ड काउंट्स. इफ देयर आर 100 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, अगर एक भी बच्चा छूट गया देन योर पी प्रोग्राम इज नॉट सक्सेसफुल. सो यू वांट टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड पार्टिसिपेट्स. फिटनेस फॉर ऑल, एंड हर बच्चे का गुड सोशल बिहेवियर होना बहुत जरूरी है. दैट इज समथिंग दैट यू आर इनकलकेटिंग थ्रू स्पोर्ट्स. सेकंड हो गया स्पोर्ट्स परस्यूट. So whether I excel in sports or not, I should be able to be playing a set of sports. So basically
रिजिड और कंपल्सरी स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। बच्चों को बहुत सारे आप स्पोर्ट्स खिलाइए, बेसिकली रेंज ऑफ स्पोर्ट्स इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एंड सो एक्सपोज देम टू मल्टीपल स्पोर्ट्स। एंड जो बच्चे अच्छे करेंगे, दो सिलेक्टेड फ्यू चिल्ड्रन शुड बी, वी शुड बी एबल टू क्रिएट ए स्पोर्टिंग एक्सीलेंस पाथवेज। कल हम 9th to 12th के लिए जब हम बात करेंगे स्पोर्टिंग एक्सीलेंस पाथवेज के ऊपर हम बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स परस्यू के ऊपर बात करेंगे कि हाउ क्लास 6 to 8 years के जो बच्चे हैं, we should be putting them on multiple sport. That is what we are going to focus on. Sporting excellence, only some children are going to do well in sports seriously, at a serious level. So as a PE program, we should support that. तो मोटा मोटा ये होगा कि हमारा जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है, इट हैज टू बी फॉर ऑल चिल्ड्रन, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, अलाउ देम टू प्ले मल्टीपल स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, and children who are doing well in sports, make sure that there is a structured way of putting them in sporting excellence pathways. Now, this is what we spent time yesterday. Those who were not present, yeah. So here, so if you look at it, so basically it's a 4-step process. Step 1 is basically about movement education. हम class 1 to 3 के लिए कल हमने बात किया था, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स, बेसिक स्किल्स, जिसमें रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग, कैचिंग, थ्रोइंग, बैलेंस, स्टेबिलिटी, इस तरीके की बहुत सारे एक्टिविटीज है। कल हमने काफी सारे एक्टिविटीज के बारे में हमने बात किया था कि आप एनिमल वॉक्स करा सकते हो, पोजेस करा सकते हो, म्यूजिक के साथ यू कैन गेट देम टू पार्टिसिपेट इन रिदमिक म्यूजिक, जिम्नास्टिक्स की हमने बात किया था, स्विमिंग की बात किया था। विल टॉक अबाउट सम ऑफ दोस थिंग्स अगेन। बट देन जब बच्चा वो नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है, क्लास 4th ऑनवर्ड्स, यू स्टार्ट देम डेवलपिंग सर्टेन बेसिक स्किल्स इन स्पोर्ट्स। जैसे मैं रनिंग लाइक ए स्नेक अगर गेम था पहले, तो रनिंग लाइक इस गेम को जब मैं एक फुटबॉल दे देता हूँ बच्चे को, तो जिगजैग रनिंग के साथ जब वो फुटबॉल ले लेता है, वो ड्रिबलिंग का स्किल सीख जाता है। सिमिलरली बास्केटबॉल दे देता हूँ, तभी भी वो ड्रिबलिंग का स्किल सीख जाता है। क्रिकेट में जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट होता है, अगर 2 कोन है, बच्चा दूसरी जगह, जैसे हम डॉग को एक बॉल फेंक देते हैं, वो लेके आ जाता है, वो वाला हमने, अगर हम बोल देते हैं उसको कि डॉग एंड द बोन वाला गेम खेल रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली गोइंग फेचिंग द बोन एंड कमिंग बैक, जो बीन बैग है या व्हाटएवर। लेकिन जब हम क्रिकेट में अप्लाई करते हैं, उसमें हम रनिंग बिटवीन द विकेट भी हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्किल्स को कैसे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे हम क्लास 4th ऑनवर्ड्स, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि रेंज ऑफ फिजिकल एंड स्पोर्टिंग एक्सपीरियंसेस and unki involvement is what is important. We also talked about that safe practices and also value education like respect, responsibility, resilience, integrity, care, harmony, ये सारे बड़े important है। So from movement education we talked about broad based development, जिसमें from basic simple activities to some sporting skills activities what we talked about. So today we will move to class 9th and 10th, and that is what we class 6, 7, 8, sorry. So today we are going to take the discussion further कि 6, 7, 8 के लिए किस तरीके से हम sports को introduce करें and क्या क्या sporting activities उनको करना चाहिए. So let's get into that. And tomorrow when we discuss, we are going to talk about class 9 to 12, where we are going to create 2 different pathways. One is recreational participation, बहुत सारे बच्चों के लिए, where they can get engaged in a lot of physical activity and sports skills development. And second is sports pursuit. So basically making sure that every child is playing at least 3 to 4 different kinds of sports. When he's from 9 to 12 में कम से कम 3-4 sports वो उस 4 साल में वो खेल ले. And some children who are going to do well in sports, and some basically when children are getting are playing in multiple sports, class 6 onwards थोड़ा थोड़ा खेलेंगे, हमें 9th तक पता चल जाएगा कि वो किसी स्पोर्ट्स में किस में स्पेशलाइज कर रहा है. And if someone is doing very well, we put them on sporting excellence pathway. So this is a broad map that India should be following, and I think sports ministry is also considering putting a structure like this. So we are going to put, so this is a structure where we are talking about making everyone together. So in class 6 to 8, बड़ा important है that so this is what it basically would mean from fundamental movement skills जो हम बचपन में कर रहे थे. Now we are, so these are 2-3 basic things that we are going to talk about. कि बहुत सारे modified और recreational games खूब सारे खेलें, बच्चे उसमें मस्ती करें, फन होना बहुत जरूरी है, क्रिएटिविटी
बहुत वेरिएशंस होते रहना चाहिए. सो वी हैड टॉक्ड अबाउट सेशन प्लानिंग का जब सेशन था जिसमें डॉक्टर अजीत, डॉक्टर झांझरिया, डॉक्टर विनीत ने बताया था कि 40 मिनट्स की प्ले में हम किस तरीके से सेशंस को प्लान करें, ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करें ताकि बच्चे अलग अलग चीजें कर पाए उसमें. सिमिलरली yesterday also we talked about it that how do you engage children in multiple activities when multiple classes are on. बट इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास 6 to 8 में बेसिक स्पोर्ट्स स्किल्स, मल्टीपल स्पोर्ट्स स्किल है और साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल. तो ये चीजें हैं. प्लेइंग ए वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स इज व्हाट इज द की टेक अवे इन क्लास 6 to 8, जिसमें फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स तभी कर रहे थे, अभी हम फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल्स की बात कर रहे हैं. तो ये हम एक लेवल का आगे का है, उसमें फंडामेंटल मूवमेंट की स्किल्स से इसमें फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल्स की बात करें, बेसिक स्किल्स. बट द आइडिया इज दैट चिल्ड्रन शुड बी प्लेइंग ए वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स. So let's look at this video. This will, I think you would like this video. खेलो इंडिया, साथ में हैं हम. This is such a beautiful video. I keep watching it again and again and again. It's such a beautiful this thing with a lot of messages. It's all about physical literacy. I think the importance of physical literacy के बच्चे जो है sports के through क्या क्या चीजें पा सकते हैं.
This is what it actually beautifully demonstrates. So this says that इसमें अगर हम lyrics को देखें, it says और खेलना चाहते हैं हम. So I think every child or every person, I mean, given a chance, everyone wants to play a little bit more. So everyone wants to physical education period जब खत्म होता है, जिस दिन PE होता है स्कूल में, no child wants to miss the school. So if there is a PE day, always, even if you have fever, you want to go to school. When the PE period ends, बच्चे को 5 मिनट और खेलना चाहता है. When the teacher is late in the class, बच्चे टेबल से उठ के they also want to play, so they start throwing darts at each other, rocket फेंकते हैं, कोई एक दूसरे को भागता है. And when the teacher comes, वो जल्दी से बैठ जाता है. So basically, about every child wants to play 5 minutes more. It says खेल में मस्ती है. So basically, it's all about joyful learning. I mean, there is so much of joy, there's so much of happiness when you actually play. And in fact, it is said that if you play for 15 minutes in a day, so that leads to almost 2 hours of concentration. बच्चे को अगर जबरदस्ती पढ़ा रहे हो, लेकिन you give them a break in the evening, and when the child comes back, he is like mentally totally fresh. मस्ती भी है, उसके साथ आपकी concentration भी improve होता है. खेल से मुस्कान पाते हैं, so it's again about happiness, a smile. चांद छूना चाहते हैं हम. Basically, so there's a sports is all about aspiration. Everyone wants to win. Everyone wants to reach the sky. खेल जीतना सिखाता, so it actually teaches you to win. Winning doesn't mean actually winning in a match. It's actually it helps you to become a champion in life. That is what is important. When you say जीतना सिखाता है, so whether you lose or when you win. So अगर आप देखें, you look at any match, जो टेनिस का मैच होता है, कोई भी मैच होता है, जब मैच खत्म हो जाता है, जो प्लेयर हार भी जाता है और कोई जीतता है, both of them they behave very normally. So failure and winning and failure is actually treated in a very balanced, mature manner. So because you know that today you fail and tomorrow you are going to win. I think that's a very big lesson कि खेल से जीतना सिखाता है. So you actually are very you tend to be a very composed person. खेल में क्या बात है? It's basically there is a wow factor that we are talked about. एक दूसरे के साथ है. It actually teaches you teamwork. So this whole thing was about hum. Hum is not about, it's not about me, it's about us. So it actually teaches you a lot of collaboration, teamwork. Hum basically it says that I am the best. So it's all about personal excellence, having you a lot of values. Okay, so let's look at so this is what it is. So which basically is that some children want to play a lot of sports of a child. So in this period, so the idea is that not only sports, you look at mathematics, science, English, any subject. So class 6 to 8 is when you actually, if you're a parent, many of you are parents, you will understand, like I'm a parent, my son is in class 10, the other one is in class 6. I can see that in the period of 6 to 8 years, you tend to develop certain interest. So it is very important that as a parent or as a teacher, you expose them to different experiences. So it need not be only sports, but within sports also a variety of choices. Choice is very important. So in class 6 to 8, so yesterday we talked about for nursery up to class 5th. So we talked about locomotor skills, manipulative skills और stability के skills की, body management skills की हमने बात किया था, where we talked about कि बच्चों को you give them all the physical activities that you do should be around improving their locomotor skills, manipulative skills और stability skills. Basically it means कि उनके running, jumping, hopping, dodging, galloping, इस तरीके के जो skills होती है locomotor skills वो आप develop करें. Manipulative skills मतलब catching, throwing, striking or dribbling with hand, dribbling with feet. तो इस तरीके के skills है. मतलब catching a bounce ball, catching a straight ball, small ball, you bounce on a wall, you catch it back. So a lot of activities that you do would basically be around that. Stability skills मतलब कि balance हो गया, walking on a straight line, walking on a beam, इस तरीके के बहुत सारे activities होंगे. Gymnastics और swimming हमने कल discuss किया कि बहुत important component है. Rhythmic activities काफी कराई है छोटे बच्चों को. फिर हमने डिस्कस किया था स्पेस, बॉडी और एफर्ट अवेयरनेस के बारे में. कल हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी
डिस्टेंस बच्चों को अगर बॉल फेंकना है 2 मीटर फेंकना है 4 मीटर्स फेंकना है 6 मीटर्स फेंकना है और 10 मीटर्स द एफर्ट विल चेंज similarly the direction in which you throw it is a very important thing different aspects like मेरा upper body है lower body है मैं throw कर रहा हूँ तो कौन सी part of the body में use कर रहा हूँ वो भी बहुत important है relationship with objects या relationship with a partner so relationship awareness भी बहुत important है Similarly, हमने ये डिस्कस किया था कि when you actually start applying whatever you are learning from like running like a snake, zigzag running की बात करें, कल हमने एक एग्जांपल देखा था कि वो अगर हम फुटबॉल हम दे देते हैं तो zigzag running के साथ वो फुटबॉल लेता है वो ड्रिबलिंग का स्किल सीखता है. Similarly, अगर अपर आर्म थ्रो अगर है मतलब कि अंडर आर्म या अपर आर्म थ्रो है तो हम बाकी स्पोर्ट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं बैडमिंटन हो गया टेनिस हो गया उसको टीटी हो गया जैवलिन हो गया किस तरीके से हम हमने वो एग्जांपल लेके हमने देखा था हमने ये भी डिस्कस किया था दैट यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग देम टू सम टीम एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के बेसिक स्किल्स दे मे नॉट नो दैट इट इज अ टीम और इंडिविजुअल स्पोर्ट बट बेसिक स्किल्स लाइक when you do a inter house competition inter house का एक्टिविटी कराएंगे so you typically do कि ड्रिबलिंग का दिखा रहे हैं सर्किट्स में बच्चे भाग रहे हैं पानी के अंदर दे डू सम सॉर्ट ऑफ स्प्लैश पूल या सिंपल स्विमिंग सीख रहे हैं तो छोटे छोटे इनोवेटिंग इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करा रहे हैं वी आल्सो टॉक्ड अबाउट क्लासरूम एक्टिविटीज आल्सो दैट यू कैन डू mirror की games so we talked about lot of fun elements which are there from nursery to 5th but now we are in class 6th in class 6 all what you need to do is to जो भी बच्चों ने transition of movement skills to sports skills में हो रहा है so you give them start giving them more exposure you start getting them to play a variety of individual and team sports ओलंपिक के गेम्स कोई भी ले लो या तो ट्रेडिशनल गेम्स है कबड्डी खो खो की तरह बहुत सारे गेम्स है और या रिक्रिएशनल गेम्स है मतलब कि यू क्रिएट गेम्स ऑन योर ओन और इंटरनेट पे बहुत सारे एक्टिविटीज है आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में एक्टिविटीज आपको वैसे मिलेंगे हमने ये इम्पोर्टेंट है कि इस पीरियड में 6 to 8 इयर्स में बच्चों का हेल्थ रिलेटेड फिटनेस अच्छा होना जरूरी है तो हम थोड़ा सा उसमें फोकस होना चाहिए कि जितने फिटनेस सारे मतलब बाकी कंपोनेंट्स के ऊपर भी हम ध्यान दें स्किल रिलेटेड फिटनेस के भी बट डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फिटनेस कंपोनेंट्स में फोकस होना चाहिए सिमिलरली ऑन व्हाट यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योगा टू चिल्ड्रन उससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं बट वी डोंट कॉल देम योगा बट जब हम कुछ करना चाहते हैं the importance of all children participating ऐसे में हो एक्सरसाइज कर फिर मास पीटी एरोबिक्स डांस इस तरीके के instead of having dance as a separate class you can actually involve a dance teacher also in your activities so important है कि mass activities भी हो mass participation then this is a stage when इससे पहले बच्चों को हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता है ना तो वो ज्यादा बॉदर्ड भी है to is class 6 onwards we also do a little bit of like important चीज है because when you actually step out there are a lot of activities that you do जैसे अभी फिट इंडिया ने किया था एक इवेंट कॉल्ड प्लॉगिंग मतलब जॉगिंग along with picking up litter तो बेसिकली गंदगी स्वच्छता मतलब it's for the health of yourself and health of the planet जैसे प्लॉगिंग हो गया जॉगिंग भी कर रहे हैं वो साथ में गंदगी भी उठा रहे हैं तब बाहर ये जो है एनवायरनमेंट के साथ हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं एनवायरनमेंट साफ भी हो रहा है और आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं गार्डनिंग हो गया ग्रास मोइंग हो अभी हमारा मिनिस्टर को देखें बॉस में साइकिलिंग कर रहे हैं सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू इन हार्मनी विद एनवायरनमेंट एडवेंचर एक्टिविटीज हो गया तो ये मोटा ये सारे जो है सोर्सेस फ्रॉम 8 जो क्लास है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि देयर हैज टू वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम ओलंपिक टू रिक्रिएशनल टू योगा फिटनेस कंपोनेंट्स मास पीटी ये सारी चीजें क्या है हम इसके आगे देखते हैं एसेंशियली व्हेन यू डू रनिंग वॉकिंग जो भी है एजिलिटी की ट्रेनिंग होनी
चाहिए, some activities in water होना चाहिए, major minor recreational games. मोटा मोटा ये अगर हम देखा जाए, what is the construct of the curriculum? So NCERT मैम ने मैडम ने जो बताया था, क्लास 6 और 8 एनसीईआरटी की बुक्स है, एनसीईआरटी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है क्लास 6, 7, 8 के लिए। तो मेरा ये होगा सबको कि आप एनसीईआरटी की साइट में फ्री में पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल है, आप 6, 7, 8 के जितने भी बुक्स आप उनको डाउनलोड कीजिए। ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स व्हिच आर देयर, बट बेसिकली क्लास 6, 7, 8 में the curriculum actually talks about your body, bones, talks about physical fitness, talks about a lot of games. There are covered है उसमें, sports injuries उसमें covered है, then food and nutrition उसमें covered है, and yoga for concentration, yoga for health, yoga for physical fitness. तो 6, 7, 8 में थीम्स है हेल्थ, फिजिकल फिटनेस और ये, और बाकी गेम्स एंड स्पोर्ट्स है। So when you're looking at games and sports, so what it essentially means that you have all the other sports है, जिसके जो बेस है, बाकी किसी स्पोर्ट्स का बेस ही यही है, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग। तो आपके जो डेवलपमेंट अगर हम ये तीनों स्पोर्ट्स में अगर अच्छे हैं तो बाकी सारे स्पोर्ट्स में ही है। सेकेंडली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जो हम अकेले खेलते हैं, टीम स्पोर्ट्स है जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वो सारे टीम स्पोर्ट्स हैं। देन ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स, कबड्डी, खो खो, ये सारे इंडियन स्पोर्ट्स। फिर योगा हो गया, आउटडोर एजुकेशन हमने कर लिया। फिर फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में भी पी में ये होना चाहिए। फिजिकल लिटरेसी वी टॉक्ड अबाउट कि वैल्यूज ऑफ स्पोर्ट्स, हम कोई भी चीज करा रहे हैं, एक्टिविटी करा रहे हैं, उसके पीछे हम काफी चीजें हम सीख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा। और हमारे जब हम स्पेशली टीम गेम्स में हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, तो काफी बार एक पर्सन ठीक कर रहा है तो दूसरा पर्सन ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो क्रिकेट में देखें, कोई 0 में आउट हो जाता है, 2 प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, समवन एल्स एक्चुअली पिक्स अप फ्रॉम देयर। और सिमिलरली मतलब ज्यादा एविडेंट उसमें, क्योंकि हम लोग सबको पता होता है क्रिकेट के बारे में, कभी कभी गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज। सो फिजिकल लिटरेसी में हम एक्चुअली जो वैल्यूज सारे, all the values of excellence, competition, collaboration, determination, ये सारी चीजें हम सीखते हैं उसमें। रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, तो रेस्पेक्ट एक बहुत जरूरी चीज है जो फिजिकल लिटरेसी के थ्रू हम सीखते हैं, क्योंकि पॉइंट विनिंग एट एनी कॉस्ट। तो चीटिंग जो करते हैं, तो चीटिंग करके करते हैं तो आप रेस्पेक्ट लूज करते हो। एथिक्स इन स्पोर्ट्स, ये बहुत, एथिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू एक्चुअली लर्न एज पार्ट ऑफ फिजिकल लिटरेसी। तो कुछ एस्पेक्ट्स हम 6 to 8 में सीखेंगे, कुछ 9, 10, 11, 12 में सीखेंगे। जैसे स्पोर्ट्स एथिक्स है, काफी बार समझ में नहीं आता, वो 9, 10, 11, 12 में ज्यादा समझ में आता है। बट देन द लास्ट थिंग इज अबाउट बॉडी एंड लाइफस्टाइल। बॉडी मतलब उसमें न्यूट्रिशन भी आ गया, लाइफस्टाइल भी आ गया, कि हमारा पोस्चर कैसे होना चाहिए, दिन में कितने घंटे हमें टीवी देखना चाहिए, कितने घंटे हमें फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, कितने घंटे गॉसिप करना चाहिए। गॉसिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इवन लाइफस्टाइल, उसमें भी आपका काफी स्किल्स डेवलप होते हैं। तो आप कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे क्या क्या एक्टिविटी, टिपिकल एक 24 घंटे का कैलेंडर है तो किस तरीके से करना चाहिए। सिमिलरली लाइफस्टाइल का मतलब पोस्चर है, कैसे बैठना चाहिए, सीधा बैठे हैं, कितना, ये भी कहते हैं कि सारे देर आप मत बैठो। जैसे मैंने एक्चुअली अपने घर में अभी जैसे ये सेशंस होता है जिसमें मैं नहीं होता हूँ, तो मैं खड़े होकर भी काम करता हूँ। अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ तो अभी बैठ के बात कर रहा हूँ। लेकिन सो यू क्रिएट, ये है मतलब आपको स्टैंडिंग डेस्क मैंने वैसे बनाया हुआ एक शेल्फ को ये करके। तो आप लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बैलेंस डाइट क्या है, एक्टिविटीज का स्प्रेड कैसे होना चाहिए पर्टिकुलर डे में। तो ये सारी चीजें करिकुलम का पार्ट होना चाहिए 6 to 8 में। सो बेसिकली टू समराइज, ए वेराइटी ऑफ स्पोर्ट्स, योगा, आउटडोर एजुकेशन, फिर हेल्थ एंड फिटनेस, फिजिकल लिटरेसी एंड लाइफस्टाइल। सो दीज आर द बेसिक थिंग कंस्ट्रक्ट। हम उसके ऊपर जो भी हम उसमें डेविएशन हम करें, उसमें फर्स्ट एड, सेफ्टी, वो सारा है, बहुत सारी चीजें। सो हम अभी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करेंगे, बट द थिंग्स लाइक फर्स्ट एड, थिंग्स लाइक सेफ्टी,
lifestyle, we have separate sessions for them. So I'm not going to focus on nutrition or first aid and safety, because those are special sessions to be taken by experts. So we'll have them on a later date. The first one is basically about teaching sports skills. So here, the first most important thing, that athletics is something that should be made compulsory for all children. ट्रैक एंड फील्ड का जो इवेंट्स है, तो बेसिकली इफ यू लुक एट इट, जो मैंने बचपन में सीखा था रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन में जो टेक्निक्स मैंने सीखा था, अब मैं उसको स्पोर्ट्स में अप्लाई करने स्टार्ट कर दिया. सो व्हेन यू से ऑन योर मार्क गेट सेट गो, सो इट बेसिकली मींस then it is about a lot of things. It's all about practice, it's all about technique, it's all about skills. तो आपको बहुत सारे, आपको स्ट्राइड लेंथ लंबा होना चाहिए, कौन सी पॉइंट में आपको पीक करना चाहिए, बॉडी को कैसे पोजीशन में रखना चाहिए, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीजें आर पार्ट ऑफ द टेक्निक. तो ये चीजें मैं धीरे धीरे सीखने लगूंगा. व्हेन आई गो इनटू 9th and 10th तो और थोड़ी अच्छी तरीके से, बट 6, 7, 8 में आई एम आल्सो लर्निंग ऑल दैट. सो माय रनिंग जो मैं सीखा था, रनिंग ऑन वॉकिंग, आई स्टार्ट अप्लाइंग फॉर रनिंग इवेंट्स. मैं थ्रोज वगैरह जो सीखा था बचपन में, throwing small ball, throwing bigger ball, फिर मैं कैचिंग भी सीखा था उस समय, ये करके. तो ये सारी चीजें अलग अलग डिस्टेंस पे आई स्टार्ट अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स दैट आई लर्न टू थिंग्स लाइक शॉर्ट डिस्कस हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, जैवलिन हो गया. सो ऑफ कोर्स हमें बड़ा वाला जैवलिन यूज करें ना करें, बट एटलीस्ट जो है साइज के हिसाब से, जो एज के हिसाब से हम ये करें. वेट्स सिमिलरली जो जंपिंग मैंने सीखा था बचपन में, वो जंपिंग नाउ आई स्टार्ट अप्लाइंग as a student. So as a PE teacher, you are going to teach me how should I jump, a long jump, high jump, triple jump. So these are different kinds of jumps. इससे ऊपर pole vault भी हो गया. Pole vault is a much more evolved this thing, but depending on the infrastructure that the school has, depending on, like long jump pit के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ट्रिपल जंप के लिए मुझे कुछ ऐसे कुछ नहीं चाहिए, हाई जंप के लिए ऑफ कोर्स आई नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप आई डोंट नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, आई नीड प्रॉपर सैंड पिट. सो रनिंग के लिए आई जस्ट नीड ए सिंपल ट्रैक. सो रनिंग एंड सिमिलरली वॉकिंग मैंने भी लिखा हुआ है. वॉकिंग इसलिए बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सोशल इवेंट दैट स्कूल शुड बी डूइंग विद द कम्युनिटी में. आप कभी मैराथन ऑर्गेनाइज किया, कभी आपने कैंसर सोसाइटी के लिए कुछ आपने वॉकाथन आपने ऑर्गेनाइज कर लिया अलॉन्ग विद पेरेंट्स. So all these things in terms of running, throwing, jumping, walking. So track and field, this thing has to be made compulsory for all children, so that everyone, so every school have a small area. Wala to 30 meters ka hi sahi, park hi sahi, even if it is not a straight line, but basically running itself as a yeah. Second thing is basically about between gymnastics, swimming, wrestling and martial arts. आप कोई एक एक्टिविटी कम से कम कराए, कम से कम. I mean, it says at least one activity. It can be more also. You can rotate them also. If you have facilities, then you do that. So जैसे मैंने बचपन में I had learnt about balancing on one leg, stock test, flamingo की तरह मैंने खड़ा हुआ था बचपन में. So I was standing like a like a flamingo. I had learnt about forward roll, backward roll, pencil roll. So जितने भी rolls, handstand, जितना भी whatever I had learnt as individual techniques, I put them in sequence. If I put them in sequence in terms of forward roll or backward roll, and in a particular sequence, I start learning gymnastics here. Similarly, swimming is very, very important. But the problem with swimming is सारे schools में होता नहीं swimming pool. पर gymnastics का हमने जैसे बताया था कि initial जो education gymnastics हम class 5th तक कर रहे थे, कोई investment की जरूरत ही नहीं है उसमें. योगा मैट ही चाहिए. और जब 6 to 8 आया है, अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं ऑन जिम्नास्टिक्स के उसमें, तो बहुत कुछ हो सकता है. मतलब आपको सरफेस को, एक मल्टीपर्पज हॉल के सरफेस को ठीक करेंगे तो बहुत चीजें हो सकता है. सिमिलर थिंग्स लाइक रेसलिंग भी, रेसलिंग हो या तो कोई भी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स है, तो उसमें काफी अच्छे हमारे डेवलपमेंट हो जाता है एज अ इंडिविजुअल. एंड उसमें the things that you typically need to look at कि अगर हम end of the year में assessment कराए, ये सब चीजों का individual sports है. टीम स्पोर्ट्स के assessment और उसके values अलग है. इस केस में हम क्या क्या skills उन्होंने सीखा,
फिर उनकी measurement, rules of the game, behavior कैसा था बच्चों का on the ground, because इसमें absolute winning and losing थोड़ा ज़्यादा absolute है. So बच्चों में थोड़ी सी हमें देखना होता है कि वो behavior कैसा है, are they feeling motivated, are they feeling demotivated, how do you keep them motivated. तो हमें उस तरीके से फन की तरह करना है और हमेशा ये ध्यान देना है कि इट इज अबाउट सेल्फ बेटरमेंट. सो जो मैं लास्ट ईयर कर रहा था तो मैं उससे इम्प्रूव हुआ कि नहीं है. सो वी से दैट व्हाटएवर इज द लेवल ऑफ फिटनेस और स्किल्स, गिव इट अ प्लस. मतलब आपको उसके नेक्स्ट स्टेज में ही जाना है. टीम स्पोर्ट्स एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि हम टीम स्पोर्ट्स whatever, again जो भी मेरा manipulative skills मैंने सीखा था बचपन में in terms of striking with an object, so now I'm using them in, let's say, hockey, cricket, football, dribbling, playing with the feet, hand. फिर मैं basketball में भी same चीज use कर सकता हूँ. So basically I'm learning a lot of skills, whatever skills that I had actually learned there, in terms of throwing, upper hand throw. So my throws are perfect. So everything that I'm doing with my hand, leg, I'm start using them in sports. So here, the basic thing, I think point number one is about teaching skills of various team games. But the most important thing to me as a PE teacher, सिखाना important नहीं है, बच्चों के interest sustain करना. Sustaining their interest in learning skills is very important. And the third thing is basically about developing quality of team spirit, cooperation, leadership. जब कैप्टन्स को हम चेंज करते हैं, प्लेयर्स के कैप्टन्स को चेंज करते हैं, हाउ डू पीपल बिहेव, आर दे गुड फॉलोअर्स, इफ समवन इज अ गुड लीडर. सो लीडरशिप, फॉलोअरशिप दोनों इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर, यू हैव टू बी गुड फॉलोअर आल्सो. जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में वी हैड डिफरेंट प्लेयर्स, डिफरेंट कैप्टन्स एट द सेम टाइम. वी हैड सचिन, वी हैड राहुल द्रविड़, वी हैड सौरव गांगुली, ऑल ऑफ देम प्लेइंग अंडर MS धोनी. Now later Dhoni playing under Virat Kohli. So आप हो सकते हैं कि आप कैप्टन थे, but not at some point of time. So you should be a good leader, you should be a good follower, cooperation, team spirit, सब कुछ होना चाहिए, बहुत important है. And some of the children class 8 तक जब पहुंचेंगे, we should be able to identifying and nurture the talent of students. So मैं आपको खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट के बारे में बताऊंगा पूरे एंड में. And we have a session on 23rd, 24th and 25th day of this thing where we are talking about talent identification. कि कैसे talent identification government किस तरीके से करना चाहता है. तो ये सारी चीजें important है. Of course, talent identification individual sports में भी है. So that is what it actually is. So again, to extend it further, so the skills that I learned in the younger years, so whether it is basketball, so hockey, badminton, volleyball, kho-kho, kabaddi, all of this actually need different skills. And the idea is that you expose children to different this thing. Kya pata isme se what they like. Some children, like I have 2 kids, I put both of them for tennis in the beginning. Both of them, they do martial art, they do tennis. Both of them, they don't like cricket. Unko cricket pasand nahi hai, but they like, so now one has moved from tennis to football. So different 2 kids of the same family but different interest. But before that, they actually getting exposed to different sports. So alag sports खेले. Both of them, they do swimming. They love swimming. तो swimming में शौक है, तो किसी को football में शौक है, तो और किसी को उसमें शौक है, tennis में. And dono martial art. So basically, when you look at children, different children will start developing different interests. So you do not know what, because when a parent doesn't know, how can a PE teacher know what is a child typically would be interested in? So unless you give them exposure to everything. But recreational games, everyone loves to run around. फिर दूसरा, the next aspect is कि हम variety of sports, team and individual sports, indigenous sports की बात किए. So yoga is something that I should be introduced from class 6 onwards, where we are talking about basic yoga practices. So we have Surya Namaskar, all the asanas, yoga for health, yoga for physical fitness, meditation. फिर personality development काफी होता है yoga के through. Lot of calm, composure, stress management के लिए बहुत अच्छा है yoga. Healthy living and concentration. So class 6 to 8 में, so we are talking about we are introducing yoga so that they know about meditation, they know about basic
सूर्य नमस्कार आसनास एंड देन 9 to 12 में एडिशनल। सो एनसीईआरटी के ये सारे ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत अच्छे किताब लिखे हुए हैं, आप प्लीज देखिए उसको। सिमिलरली आयुष के वेबसाइट में बड़े अच्छे सारे वीडियोस आर सो गुड, सो यू कैन एक्चुअली फॉलो ऑल ऑफ दैट, फ्री मटेरियल एंड यू कैन एक्चुअली यूज दैट। Fit India has created the yoga protocol for class 6 to 8. Basic saying that in a school you don't need to plan for 1 hour 2 hour, बहुत time होता ही नहीं इतना लंबा, so you can actually do asanas, you can actually of course change this। आयुष की वेबसाइट में योगा के प्रोटोकॉल्स हैं, बट फिट इंडिया जो फिट इंडिया ने 15 मिनट का एक छोटे कैप्सूल आपके लिए किया कि you start with the prayer, you do सूर्य नमस्कार, then you have standing, sitting, prone and supine। prone and supine का मतलब है कि कुछ लेटे हुए पोजीशन में फेस डाउन और एक फेस अप, दो तरीके से। जैसे शवासन कर रहा हूँ तो मेरा फेस ऊपर की तरफ है, मैं वो कर रहा हूँ क्रोकोडाइल पोज और वो कर रहा हूँ। तो बेसिकली तो स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन एंड सुपाइन, इस पोजीशंस में योगा के आसन से, फिर प्राणायाम और फिर उसके बाद ध्यान। तो ये मोटा मोटा 15 मिनट में आप ये कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें आपको करना है तो 15 मिनट में 2 राउंड है, ये आराम से आप कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में भी ये प्रेस्क्राइब्ड है, फिट इंडिया के वो पार्ट है। सो व्हेन यू आर डूइंग ए योगा सेशन and you tell the children beforehand, if you tell them this is what we are planning to do, they would also get interested। आप पेरेंट्स को बताओ कि ये चीज हम कर रहे हैं, जस्ट टू से कि हम योगा कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप कहेंगे आज ये करने वाले हैं, you send it out to parents कि हम हमारा जो एक कैप्सूल है 15 मिनट का कैप्सूल है, this is what it is। so then it is a lot of fun। आप instead of having complicated terms of yoga, you can just make it fun कि इसमें camel pose है, इसमें bow pose है, crocodile pose है, आप ये शवासन को कॉप्स पर पोज है, तो ये बहुत पाम ट्री का पोज है ताड़ासन, तो ट्री पोज हो गया। तो पीपल, बच्चों को भी बड़ा पसंद आता है जब हम जो इंग्लिश के बच्चे उनको बोले हिंदी में करें, हिंदी वाले को इंग्लिश में करें। मतलब यू कैन गिव देम आल्सो एक्सरसाइज कि आप इसको फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट व्हाट इज द एक्चुअल नेम फॉर दिस पर्टिकुलर आसन, कि वो आसन को क्रोकोडाइल पोज, व्हाट इज इट इन दिस थिंग्स। सो वी डोंट नीड टू से मकरासन, वी कैन जस्ट से आप क्रोकोडाइल की तरह करो, फिर वो बताएंगे। सो इफ यू वांट टू मेक इट फन, तो हमने ये डिस्कस किया है कि जो 6 to 8 में whatever we learned, how do you transfer all the skills। so जो स्पोर्ट्स का हमने इनिशियली सीखा है, so स्पोर्ट्स का अगर मोटा मोटा हम 3 तरीके से हम करें, बाकी भी हम इसको ये कर सकते, एक्सटेंड कर सकते हैं, शूटिंग वगैरह है, बट में नेट बैरियर वाला जो गेम्स है, where we are saying that to send the object back to the opponent so that he or she is not able to return it, forced to make an error। ये कौन सी गेम्स है आप बताएंगे? नेट और बैरियर बेस्ड गेम्स है। अगर इफ समवन वांट्स टू टाइप कि क्या क्या गेम्स है इस तरीके से, तो ये जो है मोटा मोटा ये है कि आप उसको एक प्री डिटरमाइंड हाइट पे एक नेट है और आप ऑब्जेक्ट को दूसरे तरफ से आप फेंक रहे। तो टिपिकली अगर देखा जाए, ये टेनिस है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, स्क्वाश है, इस तरीके से हम जो कर रहे हैं, हम इन सब पे एसेंशियली हम क्या कर रहे हैं, हमें पॉइंट्स विन करना है। We have to set up an attack। अगर मैं ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी की बात करूं, लेकिन मैं डिफेंड में अगर दूसरी तरफ हूं, तो कोई मेरे को स्मैश कर रहा है तो मैं उसको डिफेंड करूं, फिर मैं अपना पूरे स्पेस को मुझे डिफेंड करना है। अगर मैं टेनिस की कोर्ट में हूं तो पूरा स्पेस को मुझे डिफेंड करना है जब बॉल उस तरफ आएगा, क्योंकि उस स्पेस में टच करके अगर बाहर चले जाते हैं, स्पेस में गिरता है, तो मैं डिपेंडिंग ऑन द स्पोर्ट वो हो सकता है। तो बेसिकली नेट बैरियर बेस्ड ये है। तो ये वाली चीजें जो है हमने आपको एग्जांपल भी बताया था, जैसे अपर ये कर ओवरआर्म थ्रो जो है, उसी ओवरआर्म थ्रो से मैं कितने सारी चीजें खेल में सीख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन जो स्किल्स है, मैं नॉर्मल मूवमेंट स्किल से स्पोर्ट्स स्किल्स में जब ट्रांसफर करता हूँ स्किल्स को, ये सारी चीजें हो गई। स्ट्राइकिंग एंड फील्डिंग, जैसे क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया, हॉकी हो गया, तो ये सब में अगर हमें देखा जाए तो मोटा मोटा ये है कि हमने क्रिकेट में बॉल को स्पेस पे ये करते हुए सेंसिटिव प्लेयर होता है, वो पूरे स्पेस को ये करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर टेरिटोरियल और इन्वेजन वाले जो स्पोर्ट्स हो गए, जिसमें ओपोनेंट का डिफेंस एरिया में जाके हमें गोल स्कोर करना होता है। स्कोरिंग इज अचीव्ड थ्रू सेंडिंग और शूटिंग एन ऑब्जेक्ट, बॉल है। तो जैसे फुटबॉल हो गया, फुटबॉल इज अ सिंपल एग्जांपल। इसमें ऑफेंसिव स्ट्रेटजी होता है कि बॉल को अपने पास रखना है, स्पेस की
यूज करना है इन्वेट करने के लिए, दूसरे की तरफ जाने के लिए, और स्पेस भी क्रिएट करना है। इन्वेट मतलब कि दूसरे की टेरिटरी में, फिर हमें गोल स्कोर करना है। और ये डिफेंस को क्या करना होता है, बॉल को रिगेन करना, अपने पास लाना होता है। फिर डिलेइंग द इन्वेजन, बेसिकली बॉल को अपने पास रखें ताकि हम स्पेस ना दे उसको हमारे स्पेस में आने के लिए, हमारे पार्ट ऑफ द। सिमिलरली डिनाइंग स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, अब गोलकीपर है तो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत सारे, अगर हम ये कर रहे हैं एज एन एग्जांपल में, फुटबॉल और हैंडबॉल अगर देखो तो बेसिक बहुत सारे स्किल्स है। सिमिलर टेनिस खेलूं या बैडमिंटन खेलूं या ऐसी चीजें, जब हम एक कैटेगरी का स्पोर्ट्स खेलते हैं तो पूरी कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स में जो प्रिंसिपल्स है इन टर्म्स ऑफ हमारा मेंटल और फिजिकल बिल्डअप है, हमारा जो स्किल्स डेवलप है, वो सारे सिमिलर है। तो एक गेम से दूसरे गेम पे हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली बच्चों का देखा जाए, जैसे जैसे अगर बेटा तो उसको ऑफ कोर्स टेक्निक्स बेसिक प्रिंसिपल्स बहुत सारे सिमिलर रहेंगे। तो मोटा मोटा अगर हम देखा जाए तो ये है। तो मेरा स्पोर्ट्स जब वो खेलता है, मतलब एक कैटेगरी में भी जो है, हम अलग अलग ईयर में अलग अलग चीजें जब खेलते हैं बच्चे, तो बेसिकली क्या होता है, कहीं ना कहीं पे उसका इंटरेस्ट, पहले तो इन तीनों में से कौन सी बकेट में उसका इंटरेस्ट है, अगर उस बकेट के अंदर वो खेलता है, उसमें एक स्पोर्ट्स और दूसरे स्पोर्ट्स में वो आराम से काफी बार फिट हो जाते हैं, वो बड़ी अच्छी तरीके से। So essentially, what you need to do is to expose children to all of this. फिर situational games आप बनाएंगे। Situational games would typically mean that अगर कोई territorial invasion की कैटेगरी है, तो आप उसमें आप वो सिखाएंगे कि उसको करना क्या है। कोई ओपोनेंट से अगर बॉल लेके आ गया कि आपको क्या करना है उस समय, आपको क्विक डिसीजन मेकिंग लेना है कि व्हाट इज अप्रोप्रिएट मूवमेंट दैट यू नीड टू डू, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको आप उसको बॉल को रोकना है, उसको पास करना है, उसको हेडिंग करना है, क्या करना है आपको, जो भी करना है आपको। सो यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजन हाउ टू डू। फिर उसके बाद ये होगा कि उसको कैसे करना है और क्या करना है। मोटा मोटा ये दो चीजें, हाउ एंड व्हाट, and when is a different thing, but what and how are important things. हम हर सिचुएशन में, हम गेम सिचुएशन में अपने आप को बदल सकते हैं। ये कोच कुछ नहीं कर सकते, कोच उस टाइम में कुछ नहीं कर सकते। आप ये स्किल्स जब इम्पार्ट कर लेते हैं उनको, फिर वो एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट द कैप्टन, इट इज अबाउट द प्लेयर ऑन द ग्राउंड, एंड दे हैव टू स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका लेकिन काम है कि आप उनको गाइड कर रहे हैं। Second, then the other thing that is going to that we are going to talk about कि बच्चों को स्पोर्ट्स तो खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स के साथ साथ उनके फिजिकल फिटनेस की इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो कुछ एक्टिविटीज है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि कुछ एक्टिविटीज है आपको, एरोबिक एक्टिविटीज हो गया, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज हो गया, बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज हो गया। तो ये मोटा मोटा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू ईच ऑफ देम। कुछ मॉडरेट और विगरस एक्टिविटीज आप कीजिए, थिंग्स लाइक बच्चों को कराइए, यू गेट देम इनटू थिंग्स लाइक, एंड ये खाली स्कूल में करना जरूरी नहीं, दे कैन आल्सो डू इट एट होम आल्सो। whatever can be done in school, you do it as part of your warm up, cool down or any activity, or particular days जब आपको ऑफ मिलता है, substitution periods मिलते हैं, आप सारे बच्चों को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग उसमें करा सकते हैं। बट टिपिकली थिंग्स लाइक डांसिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, स्वीपिंग, मतलब अभी कोविड-19 है तो उस टाइम पे भी घर की सफाई में भी आपको काफी कुछ आपको ये मिलेगी। लॉन मोइंग, घास काट रहे हो तो उसमें भी हो सकता है। विगरस एक्सरसाइजेस जैसे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, मार्शल आर्ट है, रनिंग है, और सॉकर, ये सारे कर रहे हैं तो हमारा विगरस एक्टिविटीज है। मसल स्ट्रेंथनिंग जैसे फ्लेक्स, ये सारे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ पुश अप्स, पुल अप्स, सिट अप्स, पेट चढ़ना, बच्चों को पेट चढ़ने में मजा आता है, टग ऑफ वॉर करना, रेजिस्टेंस बैंड है, मंकी बार्स है। तो ये सारी चीजें जो है आर थिंग्स वेयर आपका मसल की स्ट्रेंथनिंग है, फिर उसका बोन की स्ट्रेंथनिंग, ये सारे जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। जंपिंग के बहुत सारे जंपिंग के एक्सरसाइजेस हैं, टेनिस, स्क्वॉश, ये सारे में, ट्रैक एंड फील्ड में, स्विमिंग, स्किपिंग, इन सब पे वो है। तो फिट इंडिया ने भी इस तरीके से बहुत सारे एक्सरसाइजेस को ये किया है। आपको अभी कुछ हफ्तों के बाद जब फिट इंडिया का एक ऐप लॉन्च हो रहा है, तो ये सारे टूल्स सबको, सारे पेरेंट्स को भी मिलेगा, सारे टीचर्स को भी मिलेगा।
जिसमें आप मतलब एक सेट ऑफ एक्टिविटीज आप इन डिफाइन एंड्योरेंस की क्या क्या एक्टिविटीज है, जैसे स्पॉट जंपिंग, स्टेयर्स भी हो गए। स्टेयर्स इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। हम कोविड-19 में स्टेयर्स को आप यूज कर सकते हैं, घर के अंदर यूज कर सकते हैं। लेग रेजेस, पुशअप्स, गोल कीपिंग, स्ट्रेचेस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बेंडिंग डाउन, बेंडिंग फॉरवर्ड, जो भी है, बैलेंस के लिए वॉकिंग ऑन डिफरेंट शेप्स। तो इस तरीके से फिट इंडिया डे में कुछ एक्टिविटीज को रिकमेंड किया हुआ है। इम्पोर्टेंट है व्हाट इज द राइट एज फॉर स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए। इफ यू लुक एट इट, मेनी ऑफ द स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग हो गया, टेनिस हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, काफी यंग एज से प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो इसलिए हमने बोला था कि जो हमने नर्सरी टू फिफ्थ में बताया था, इसमें जिम्नास्टिक्स हमने इसलिए बात किया था, स्विमिंग के इसलिए बात किया था, क्योंकि आपको जल्दी करना बहुत जरूरी है उसमें, क्योंकि आपका पीक एज भी बहुत जल्दी आ जाता है उसमें। इन सारे में, जैसे लड़कियों के लिए जिम्नास्टिक्स 14 to 18 ईयर्स में पीक आ जाता है, स्विमिंग में भी इस तरीके से पीक में आ जाते हैं बहुत जल्दी, टेनिस में भी बहुत जल्दी प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं। इट्स वेरी स्ट्रेनियस एक्चुअली। एंड बाकी स्पोर्ट्स है जो हम ये वाला ब्रैकेट 6 to 8 की बात कर रहे हैं, तो ये वाले बहुत सारे स्पोर्ट्स जो बच्चे खेलते हैं, तो हमारे पास थोड़ा टाइम है, 10-12 साल, अगर आप किसी में देखेंगे रफली अराउंड 12 to 14 ईयर्स हैं टू पीक। So it is important that you expose them. Class 6 to 8 में बहुत सारे स्पोर्ट्स में आप कराइए, बट जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, टेनिस, ये सारे थोड़ा सा यंगर एज में कराइए, और बाकी जूडो, मार्शल आर्ट थोड़ा जल्दी कराएंगे तो ये होगा। तो स्पोर्ट्स को छोड़ के इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एंटायर स्कूल हैज टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज। 6 to 8 ईयर्स के बच्चों को मास एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, कम्युनिटी एक्टिविटीज हो या स्कूल की असेंबलीज हो, तो मास पीटी हो, म्यूजिक के साथ हो, आप अलग अलग एक्टिविटीज में पीपल शुड बी पार्टिसिपेट। इवन थिंग्स लाइक चेस इज अ वेरी गुड फॉर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मेंटल स्ट्रेंथनिंग के लिए, स्ट्रेटजी के लिए, वेदर यू प्ले एनी स्पोर्ट्स और नॉट, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Again, all kinds of activities, mass participation may make sure that you have the annual sports day, you have your inter-house competitions, you have Fit India School Week where you get children to participate, International Yoga Day है, National Sports Day है। आप हर occasion को use कीजिए for mass participation activities, plus weekly जो assemblies है, assemblies में बहुत अच्छे तरीके से mass participation हो सकता है, and you should actually use assemblies for convert कर लीजिए 50% assemblies into active assemblies। अभी फिट इंडिया ने अभी 8 तारीख को लॉन्च किया ट्रेडिशनल गेम्स का ये, तो फिट इंडिया के वेबसाइट में आप जाइए, अपने देश के कुछ ऐतिहासिक खेल जो करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद। देखिए भारत के इंडिजिनस स्पोर्ट्स और चलिए एक रोचक सफर पर हमारे साथ। इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया कमिंग सून। ये जो है ये 8 तारीख से 11 o'clock को फिट इंडिया ऑफ जो यूट्यूब और फेसबुक में जाएंगे 11 बजे। So that is being streamed right now, and later all the videos will be available to all the school. तो इंडिजिनस स्पोर्ट्स के जो अलग अलग इंडिजिनस स्पोर्ट्स इंडिया का 10 स्पोर्ट्स का भी लिया हुआ है, तो रोज एक का भी करा रहे हैं, एंड ये वीडियो सारे आपको मिल जाएंगे। फिट इंडिया ऑफ जो यूट्यूब चैनल है आपको उसमें मिल जाएगा। Anyway, to summarize, मोटा मोटा हमने सारे स्पोर्ट्स के बारे में देख लिया, योगा के बारे में देख लिया, हमने ये भी देखा, ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में देखा, मास पार्टिसिपेशंस के बारे में देखा। बट एसेंशियली इफ यू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट, ये कनाडा का मॉडल है, स्पोर्ट्स फॉर लाइफ मॉडल है, 7 स्टेज का मॉडल है। तो बेसिकली फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स हमने बचपन में सीखा, क्लास 5th तक मोटा मोटा सीखा। ऐसे बहुत थिन लाइन है एक्चुअली उनके बीच में। देन जो क्लास 6 to 8 में जो है, वी आर एक्चुअली बिल्डिंग द फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल्स। तो इसका डेफिनेटिव आउटकम तो फिजिकल लिटरेसी है, बट बच्चे धीरे धीरे करके ऊपर फ्रॉम स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, फिर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस के पाथ में वो नेक्स्ट स्टेज में वो धीरे धीरे जाएंगे। जब क्लास 9 to 12 में हम बात करेंगे कल, so there we are going to talk about recreational participation and active lifestyle का एक है, fitness and active lifestyle as one of the main components. Second is about sports pursuit, and third we are going to talk about sporting excellence.
तो स्पोर्टिंग एक्सीलेंस इज एन आउटकम। तो स्कूल सिस्टम से बाहर हो जाएगा जब वो बच्चा स्पोर्टिंग एक्सीलेंस पे आएगा, तो ऑलमोस्ट 12th में होगा या उसके बाद ही होगा स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। तो लेकिन हमें 12th तक उनको ले जाना है, तो दैट टाइम ड्यूरिंग द 9 to 12 we should be building physical and mental capabilities. So yesterday we talked about fundamental movement skills, today we are talking about fundamental sports skills, tomorrow we are going to talk about building physical and mental capability. तो वो टिपिकल है। उसके बाद स्कूल के से बाहर बच्चे आने लगते हैं, so that is when they are actually peaking in terms of the sporting performance. एक important aspect है, so I'll just play the video and then we'll talk about it, कि हम जो sports करते हैं, sports is all about science. sports में science के बिना sports हो ही नहीं सकता। अगर मेरे को performance improve करना है तो मैं science को use करना बहुत ही है। So I'm going to talk about a story of an athlete. फॉस्बरी के नाम से आप वो जाने जाते हैं। सो ही वाज द फर्स्ट जंपर, हाई जंपर। तो इन्होंने इंस्टेड ऑफ जंपिंग फ्रॉम फ्रंट, उन्होंने पीछे से जंप किया। वो क्यों किया, उससे क्या हुआ, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। In the early 1960s, Dick Fosbury tried his hand at almost every sport, but never excelled at anything until, at the age of 16, he turned to the high jump. But when he couldn't compete against the strong athletes at his college, using the standard high jump techniques of the time, Fosbury tried to jump a different way, backwards. Instead of jumping with his face towards the bar, bringing each leg over in the traditional straddle method, he jumped with his back towards the bar. Fosbury improved his record by over half a foot and left his coaches amazed by this strange new style of high jumping. During the next few years, Fosbury perfected his high jump style, won the U.S. national trials, and assured his place in the 1968 Olympics in Mexico. In the Olympic Games, Fosbury amazed the world with his new technique, winning a gold medal with an Olympic record leap of 2.24 meters. By the next Olympic Games, almost all the competing high jumpers had adopted what came to be known as the Fosbury flop. What's the secret behind the technique? It lies in a physics concept called the center of mass. For every object, we can locate the average position of all of its mass by taking into account how the mass is spread around the object. For instance, the center of mass of a flat rectangular object of uniform density will be in the intersection of both diagonals, in equal distance from each corner. We can find the center of mass for other objects by similar calculations, or by finding the object's balancing point, which lies right underneath its center of mass. Try balancing a broom by holding it and slowly bringing your hands together until they meet. This balancing point lies right underneath the broom's center of mass. We humans also have a center of mass. When most people stand up, their center of mass is around the belly. But what happens to your center of mass when you lift your hands in the air? Your center of mass moves upwards. It moves all the time as you move through the day, based on how your body is positioned. It can even move outside of your body. When you bend forward, your center of mass is located below your bent belly, in a place where there is no mass at all. Weird to think about, but that's the average position of all your mass. Many objects' center of mass are outside their bodies. Think of donuts or boomerangs. Now look at the Fosbury flop and follow the position of the center of mass of the jumper. The jumper runs very fast, so he can divert his horizontal velocity to vertical velocity and jumps. Wait for it. There. Look at the jumper's center of mass as his body bends backward. It's below the bar. That is the secret behind the jump. With the old pre-Fosbury techniques, the jumper had to apply enough force to lift his center of mass above the bar by a few inches in order to clear it. The Fosbury flopper doesn't have to do that. The genius of the Fosbury flop is that the jumper can apply the same amount of force but raise his body much higher than before. That means he can raise the bar so high that even when his center of mass can't go any higher, his arcing body can. Fosbury's technique brought the high jump to new heights by splitting the jumper's body away from his center of mass, giving it that much more room to clear higher and higher bars. So the Fosbury flop may be sports history's only great leap forward that is also a great leap back. Yeah, so just 1 second.
we look at it, Hello. hello, hello, Hello. हाँ sir. Listening. Thank sir. you sir. It's a सर एक सेकंड स्टॉप हो गया क्या शेयर? हाँ सर. so presentation was a beautiful one. So hello. we have time, 10 minutes. Yeah. Madam is waiting for that. We have 10 minutes, right? Yes, I'll take 5, sir. Okay. Okay. एक minute, sir. Actually, I don't know why it is. So can you see it? Yeah, I can see it, sir. Okay. So here, so when we looked at this one, so sports is something that in class 6 to 8 try and integrate that with other subjects also. So अगर हम जैसे things like running की बात कर रहे हैं, running जो है, through running you can actually teach things like distance, velocity और acceleration है. जंप्स की हमने देखा जिसमें सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्टिंग है आउटसाइड योर बॉडी, हम वो चीज सिखा रहे हैं. हम जैवलिन या थ्रो जब सिखा रहे हैं, हमें बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं. उसमें फोर्स भी सिखा रहे हैं, एंगल भी सिखा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल है, प्रेशर्स है. फिर उसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी हम बात करते हैं. थिंग्स लाइक हम मूवमेंट जब करते हैं तो चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड स्पीड, रिएक्शन टाइम. अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में हमारा लंग कैपेसिटी, VO2 मैक्स की हम बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं. फिर थिंग्स लाइक पल्स रेट हम मेजर करेंगे, BMI मेजर करेंगे. तो हमारा वेदर इट इज बायो, फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, हम सभी में स्पोर्ट्स को इंटीग्रल पार्ट हम यूज कर सकते हैं. हम जो बाकी सब्जेक्ट टीचर्स के साथ अगर हम कुछ कंटेंट बनाएं जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन क्लासेस भी अगर हम उनका ले रहे हैं और हम फिजिकल एजुकेशन और सब कोर सब्जेक्ट को हम ये कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं. एक छोटा सा स्टोरी है, जैसे ये हेयर एंड टॉर्टोइज वाला जो स्टोरी है, मेरे को याद है, मेरे जब स्कूल में था सो हमारे फिजिक्स टीचर ने पूछा था कि हेयर एंड टॉर्टोइज रेस में कौन जीता था और क्यों जीता था. आप में से अगर सभी ने खरगोश और कछुआ की सुना होगा कहानी, बट हैव यू थॉट कि वो स्पोर्ट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे उसका अप्लाई कर सकते हैं? टिपिकली हेयर का जो स्पीड है टॉर्टोइज से ज्यादा होता है नॉर्मली, बट स्टिल द टॉर्टोइज वन द रेस. The answer is the average speed of the tortoise is more than the average speed of the hare. That is what is important. अगर मैं हम मैराथन कर रहे हैं, हम इनिशियली तो बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लिए, लेकिन उसके बाद हमने बहुत स्लो डाउन कर लिया, तो हम जीतेंगे नहीं उसमें. बट वर्सेस अ प्लेयर who is actually running at a particular pace, पहले अपने आप को पेस करके एवरेज धीरे धीरे करके. So hare and tortoise स्टोरी से हमारे बहुत सारे लर्निंग्स है in terms of sports, कि when to peak, when to slow down, how do you maintain as velocity. So there's a lot of learnings which are there. Similarly, अगर ये tortoise ने जैसे उसको बोला कि अभी हम एक काम करते हैं, तो hare ने बोला कि चलो रूल्स को चेंज कर लेते हैं, फिर से भागते हैं. तो सेकंड टाइम when they ran, तो hare actually won the race on a shorter distance, short distance पे. तो tortoise ने बोला कि ये काम करते हैं, इस बार हम पानी में करते हैं. और पानी में जब किया तो hare वहाँ पे भाग नहीं पाया, because he was not someone who could swim. So swimming skill of tortoise actually came handy, whereas hare did not have any swimming skills. So hare and tortoise की story में हम बहुत सारी चीजें जो है sports का है. Similarly, art integration of sports is also very important aspect. COVID-19 अभी चल रहा है, इसमें जो फिट इंडिया की वेबसाइट में अगर जाएंगे तो you can actually go to fitindia.gov.in. You can find lot of capsules on active break जिसमें प्राणायाम, स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, एरोबिक्स, एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें हैं उसमें. यू कैन एक्चुअली डाउनलोड दैट. सिमिलरली यू कैन आल्सो गेट द फिटनेस सेशंस भी हैं, बच्चों को एंगेज करना है 6 to 8 के बच्चों के लिए. लॉट ऑफ स्टफ व्हिच इज देयर ऑन द फिट इंडिया वेबसाइट. प्लीज गो देयर. देयर आर लॉट ऑफ लाइव सेशंस व्हिच आर देयर, सो यू कैन एक्चुअली डू दैट. The other thing that I want to talk to you about is basically about quantifiable and measurable fitness goals. So basically, खेलो इंडिया ने फिटनेस असेसमेंट का प्रोटोकॉल्स बनाया है. तो जो क्लास 6 to 8 years के बच्चे हैं, basically 9 to 14 years. So there are 6 fitness assessment tests based on which we can actually start identifying talent. तो फिटनेस, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट के ऊपर we are going to have a separate session
around the 27th, 28th of this month. And we're going to have 2 days where we are going to tell you how your school can register and how you can also register. So meanwhile, you can always download the Khelo India school version application. Khelo India school version करके app है Google Play Store, you can download and you can also test it out yourself. आपको सारे फिटनेस प्रोटोकॉल्स, उसकी वीडियोस वगैरह सब आपको मिल जाएंगे उसमें. Small this thing before we end. हम शपथ लेते हैं कि खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे. खेलों से जुड़कर हम स्वस्थ भारत बनाएंगे. खेल खिलाड़ी का हम हौसला बढ़ाएंगे. हम शपथ लेते हैं कि हार जीत से आगे बढ़कर मैं को हम बनाएंगे. खेलों से खेलेंगे हम, देश का मान बढ़ाएंगे, संकल्प से सिद्धि लाएंगे, हम न्यू इंडिया बनाएंगे. खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे. जय हिंद. So with that, so basically to summarize, basically when you're looking at class 6 to 8, the idea is to introduce a variety of sports for children, which should be fun, health and fitness to be given due importance, and make sure that you have, depending on the space, time, equipment and people constraints that you have in your school, आप उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को प्लान कीजिए around team and individual games, yoga, indigenous games, recreational games and mass participation. And make sure that every child actually counts. Make sure that you involve each and every child. Yeah. So with that, I end the presentation. Yeah. Thank you. Thank you, sir. It's a wonderful experience. I have given a beautiful expert opinion on this topic. As now a question session is there. I request you to answer few questions, sir. Can I ask this question, Yes, sir? yes, sir. Yes. Sanjeev Kumar asked questions like, we are motivating the children. How to motivate parents to send children? How to motivate parents on children? Yes, sir. मैंने एक चीज छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया हूँ, मैं आपको बताता हूँ how it has worked for us. We work with so many schools. हमें आप PTMs होता है. मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि PTMs को एक्टिव PTMs कराइए. So where when parents actually come, so आप अगर स्कूल को, जैसे हमने वो प्लानिंग सेशन में देखा था, कल भी देखा था, अगर आप अपने स्कूल को एक्टिव स्कूल दिखाइए, जैसे आपके कॉरिडोर्स हो गया, पाथवेज हो गया, आप सब जगह पे आपने पेंट कर दिया, जैसे हॉपस्कॉच की मार्किंग से सारे कलरफुल से मार्किंग्स हो गए, तो पेरेंट्स आल्सो स्टार्ट. इट्स नॉट दैट पेरेंट्स डोंट लाइक स्पोर्ट्स, पेरेंट्स लाइक स्पोर्ट्स. व्हाट यू नीड टू डू इज टू क्रिएट अ स्कूल एज अ बैलेंस्ड स्कूल. मतलब आपको ये दिखना चाहिए कि जो स्कूल है वो बैलेंस्ड और इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है टू एकेडमिक, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर. अगर ये दिखने लगेगा पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स भी अपने आप ही एक तो इंटरेस्ट चेंज होता है. दूसरा क्या है कि जैसे पीटीएम से अगर जैसे फिटनेस असेसमेंट आप बच्चों का करा रहे हैं, आप छोटा सा एजिलिटी का सर्किट आप डालिए, जिसमें बच्चे जो पेरेंट्स जब आएंगे तो लीनियर सा सर्किट है, वो थोड़ा सा जिगजैग रनिंग करेंगे स्नेक की तरह. आप उनको एक रिपोर्ट कार्ड दीजिए, उनका BMI चेक करा लीजिए, आप उनका फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट करा लीजिए, सिट एंड रिच का बॉक्स लगा लीजिए. हर पेरेंट्स जब उनके पास एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड होगा तो उनको भी लगेगा फिटनेस जो है, फिटनेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. तो पेरेंट्स के लिए भी कुछ कुछ एक्टिविटी रखिए अपना PE प्रोग्राम में. एंड तो अभी जैसे सरोज मैडम ने बोला था, होल ऑफ स्कूल अप्रोच होना चाहिए, जिसमें बच्चे भी हो, स्टाफ भी हो, पेरेंट्स भी हो, तीनों का इंपॉर्टेंट रोल्स है. एंड यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन द स्कूल जिसमें पेरेंट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इट. तो पेरेंट्स अपने आप ही काफी मोटिवेटेड हो जाते हैं व्हेन पेरेंट्स आल्सो टेक पार्ट. मैंने देखा हुआ है पेरेंट्स काफी बार, एक पेरेंट आए थे, वो सपोज टू बी काफी प्लम्प और व्हाटएवर, तो शी सेड कि नहीं मैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकती, मैं इसमें मेरा हाथ नहीं स्ट्रेच होगा. But you will be surprised that her flexibility was almost like 32 centimeters in terms of almost stretch हो गया था. She was so surprised कि अच्छा मैं भी इतना कर सकती हूँ. I think parents को थोड़ा सा हम फिटनेस के माहौल देंगे और अपने PTMs को इंटरेस्टिंग कराए. उसी समय आप एरोबिक्स रखिए, देखिए कितने पेरेंट्स सारे पार्टिसिपेट करते हैं. Thank you, sir. One more question is that how to construct a curriculum in boarding schools? बोर्डिंग स्कूल में तो और भी अच्छा है. एक्चुअली बोर्डिंग स्कूल में यू गेट सो मच टाइम. आपका ये जो चैलेंज है 60 मिनट्स पर डे वाला जो बच्चों के साथ है, इनफैक्ट इन बोर्डिंग स्कूल्स यू कैन एक्चुअली हैव करिकुलम. आप उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कीजिए. जो फिजिकल एजुकेशन वाला पार्ट है आप स्कूल के अंदर रखिए,
और जो स्पोर्ट्स कोचिंग वाला पार्ट है बियॉन्ड द स्कूल आवर्स रखिए. सो यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ करिकुलम जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन में तो आपको 0 टू जैसे नर्सरी टू 5th है, मुझे पता नहीं कौन सी क्लास का है इनके स्कूल में, बट नर्सरी टू 5th के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज है, मतलब देयर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज. इनफैक्ट अगर हम हमारे वेबसाइट पे जाएंगे देखें 300-400 एक्टिविटीज तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे. फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स के लिए आपको स्पोर्ट्स का स्किल्स और टेक्निक्स के हिसाब से एक प्रोग्रेसिव करिकुलम कीजिए और आप उसको पीई की करिकुलम को पूरे एनुअल कैलेंडर को आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. 40 हफ्ते को आप 10-10 वीक के 4 टर्म्स बनाइए और एक टर्म में आप 2-2 हफ्ते के सेशंस बनाइए एक-एक एक्टिविटीज का, जिसको आप 2-2 हफ्ते दीजिए. तो वो आपका पीई का करिकुलम बन जाएगा. स्कूल के बाद जो है आप उसमें डेडिकेटेड स्पोर्ट्स कोचेस के थ्रू आप कोचिंग को आप स्कूल के अंदर मत रखिए, बाद में रखिए. बोर्डिंग स्कूल के लिए तो बहुत इजी है. आई थिंक दैट इज इजियर देन रेगुलर स्कूल्स. Thank you, sir. Now it will be a concluding time. So during this conclusion, one more question is that how to ensure the involvement of every child in sports? एक्चुअली कल अगर आप थे उसमें आपने दिखाया था, हमने एक वीडियो दिखाया था, एक बच्चा जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था बच्चे ने. तो हमें डिपेंड करता है, एक्चुअली क्लास के ऊपर डिपेंड करता है. जो छोटे बच्चे उनको कलर्स बड़े पसंद है, शेप्स बड़े पसंद है, ऑब्जेक्ट्स बड़े पसंद है, स्मॉलर चिल्ड्रन. But so if you have a school environment where you have a lot of colorful things, मतलब जो equipments को आपको दिखाए थे for a school which is from 500 to 1000 का school अगर size है, तो आपका जो equipment का cost है 25 से 35-40 हजार का खर्चा होगा मैक्सिमम. आप वो सारे equipment लाइए, hula hoops लाइए, slalom poles लाइए, cones लाइए, उसमें marking cones, then parachute लाइए, speed shoots लाइए. These are things. पॉपअप गोल पोस्ट लाइए, लैक्रोस जैसे गेम है वो आप अंदर करा सकते हैं. तो इस तरीके से आपको वो छोटे छोटे कलरफुल इक्विपमेंट्स होगा छोटे बच्चों के लिए, सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं. अगर आपका कोई बच्चा गेम में इन्वॉल्व नहीं है, एज ए पी टीचर यू शुड बी फ्लेक्सिबल कि अगर मैं उसमें योगा की कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है और साइड में हुला हाउस पड़े हुए हैं, तो उसके साथ अगर वो जंपिंग करना चाहता है उसको करने दीजिए. सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू बी लिटिल मोर फ्लेक्सिबल. जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्लास 6 to 8 या 9 to 12 के लिए. So what you need to do is to give them options also, give them variations also. Like beginning of the year when you're asking them what sports you want to play, let them give options. So it is your this thing to make sure that children are able to play 4 or 6 different kinds of sports at any point in time. So let them choose what they sports they want to do. You can actually create buckets saying कि आप इस buckets तीनों buckets से लेना. Like we talked about 3 different categories of sports. Within that category there could be different options. तो एक तो वो है. Similarly variations जब होंगे तो उनको करने दीजिए. Recreational games के साथ भी वो कर सकते हैं. So physical education program को आप ये कीजिए, जो स्कूल में आप 50% में PE का एक्टिविटी कीजिए और 50% स्पोर्ट्स कोचिंग का एक्टिविटी कीजिए. All the kids will start learning. Thank you, sir. Nice informative answers. Now, Dr. Usha Madam is going to cheer up this this participants. So the drowsiness which one is there now at present, that can be removed, and Madam is going to give a small presentation with action. The action song is there, please. So it's going to be very action oriented. Pam is going to take some classes now. Hi and welcome everybody. Sujit, Dr. Sanjeev Patil, and my dear friends. I'm sure you had a very
enlightening session. But now I request all of you to kindly stand up because I think you've been sitting for quite some time. Let's stand up, move your arms. So let's get a bit of break, and you can. One is I would like to say is life is meant ultimately to be, happiness is something we need to attain. And always imagine that you have a child within you. Hug the child, protect your child. The child is within you. That's the most important thing. So a simple game that you can always start with, how could you teach? For example, you can imagine it's a clock. And the clock you have 12, 3, 6, 9. You know how the clock moves. So depending on the time, if I say it's 12 o'clock, you can move your feet 12 back, 12 back. It's 12. Okay, move your hands 12. Move your hands, take it reverse 12. If I say it's 9, it's 9. And it's 3. 9 and it's 3. It's 6 and 12. 6 and 12. These are the kind of things you can slightly modify and you can start. But we're going to have a small a song. It's only provided you are happy. You can just rub your palms, you can clap, you can slap, you can drum, move your feet. So that's what is required. So if I ask you, are you ready? You're going to say yes. Let me see how many of you are ready with energy. Are you ready? It's yes. Okay, so here it goes. The song goes like this. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it and you really want to show it. When you're happy and you know it, clap your hands. When you're happy and you know it, click your fingers. When you're happy and you know it, click your fingers. When you're happy and you know it and you really want to show it. When you're happy and you know it, click your fingers. When you're happy and you know it, slap your thighs, bend. When you're happy and you know it, slap your thighs, 1, 2. When you're happy and you know it and you really want to show it. When you're happy and you know it, slap your thighs. When you're happy and you know it, stamp your feet, 1, 2. When you're happy and you know it, stamp your feet. When you're happy and you know it and you really want to show it. When you're happy and you know it, stamp your feet. When you're happy and you know it, say let's play, let's play. When you're happy and you know it, say let's play, let's play. When you're happy and you know it, and you really want to show it. When you're happy and you know it, say let's play, let's play. When you're happy and you know it, do all 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's play. When you're happy and you know it, do all 5. Let's play. When you're happy and you know it and you really want to show it. When you're happy and you know it, do all 5. Louder. Let's play. Thank you. Thank you so much, Usha ma'am. Very, I think everyone is feeling very energetic, ma'am. She is coming, sir, in 2 minutes. Yeah. Ma'am, everyone is so excited, so much energy. I mean, everyone is just loving it, ma'am. And thank you so much, ma'am, to do it in my session. I'm so happy. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hello, can I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. So from your side, it's a wonderful presentation. I never expected this much. Thank you. Nice, sir. For this session, even our respected principal is present. Every time he is very keen, and every presentation he observes. So I hope our respected principal is there online. So I request respected principal, sir. I think
He's not available, sir. Okay. So, yeah. Sir, on this occasion, on behalf of our LNCP institution and on behalf of our Khelo India, SAI, and on behalf of our respected Dr. G. Kishore sir, I thank you for Thank you, sir. this beautiful presentation, a great expert opinion we heard today. So, on behalf of our participants also, I thank you very much, sir. Thank you so much, sir. I think it was a privilege for me to be part of this thing. Sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank I would, yeah. you. Yeah. So I would request everyone to be there for the 5 o'clock presentation. So you can join in by about 4:30. This is a detail, the webinar detail, but you can actually join even without this webinar. You can join through the same link that you join your batches. So please do join. So it starts at 5 o'clock. PE and sports in Iran, focusing on the women's sport. Dr. Mariam Jaromi. So please do join us at 5 for the 5 o'clock session. आप 4:30 बजे अगर लॉगिन करें तो अच्छा रहेगा. फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इन ईरान के बारे में बात करेंगे, विमेन स्पोर्ट्स के ऊपर. डॉक्टर मैरियम जेरोमी. Thank you so much. Look forward to seeing you that time.